Hi future officers, a very good morning to all of you and welcome to the CT360 series session that we cover every Tuesday, Thursday and Saturday at 7 a.m. on our EduTabs YouTube channel. In this session guys, we cover the most important current affairs that are required to be covered from the exam point of view, and this session is going to be very helpful for all the aspirants who are preparing for RBI, NABARD and the SEBI as well as other important government exams where current affairs is really required to be covered from the exam point of view. So guys, as announced earlier, from now onwards we are starting our bright day with the most important current affairs every Tuesday, Thursday and Saturday at 7 a.m. in the morning. And in the today's session I will be discussing with you this particular list of topics that I have, that is total 12 topics we will be covering in the today's session, which are mentioned here. So let's start the today's session, but before that I'm really very sure that all of you have really watched our previous sessions और आपने previous sessions की यहाँ revision भी अच्छे से की है. तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ and let's start the very first topic, that is बीमा सखी योजना. So guys, Indian Prime Minister Narendra Modi ji has recently launched the बीमा सखी योजना from Panipat, Haryana, and this is an initiative of the Life Insurance Corporation of India, and this will empower women through financial literacy and it will provide insurance awareness to the Indian women. So basically as a part of the बीमा सखी योजना, as you can see बीमा सखी योजना, तो यहाँ पर बीमा के बारे में अवेयर कराया जाएगा इंडियन वुमेन्स को who are between the age group of 18 to 70 years, ठीक है, and they will be trained and they will become the LIC agents and they will be selling the insurance policies to the other people. So this is basically the crux of that particular scheme. Now you can see here that this scheme will empower women through financial literacy and insurance awareness, and it will empower women aged 18 to 70 as volunteer insurance agents. That means जो इसके अंदर जिन women को train किया जाएगा, empower किया जाएगा through financial literacy and insurance awareness, they will be acting as a volunteer insurance agents. Now guys, coming ahead to this particular scheme, the scheme is targeted at women aged 18 to 70 years. They will be becoming volunteer insurance agents, और हर एक women who will become the volunteer insurance agent, उनको एक stipend दिया जाएगा, and this stipend will be of rupees 7,000 per month in the first year. Let me tell you guys, under this scheme, for a period of 3 years, this stipend will be given. That is, for the first year it will be 7,000 per month, for second year it will be 6,000, for the third year it will be 5,000 per month. I hope this point is clear to all of you. So I am just giving you the introduction of this particular scheme, as this scheme will be discussed in a detailed manner by Gurkirat sir in the upcoming session of the government schemes that he is taking every Monday, Wednesday and Friday at 10 a.m. Now guys, as I have already just given you the major introduction part of this particular scheme, now one question arises to your mind and I would like to ask you here that who is presently serving as the chairperson of the Life Insurance Corporation of India. तो LIC के chairperson कौन है? सिद्धार्थ मोहंती. So Siddharth Mohanty is presently serving as the chairperson of Life Insurance Corporation of India. So this is something that we need to cover from the exam point of view. Now let us move on to the next news article, and it is a very big news article because RBI has got its new governor. So recently guys, the Indian Revenue Secretary Sanjay Malhotra has been appointed as the 26th governor of the Reserve Bank of India. तो जो students RBI की preparation कर रहे हैं या किसी और exam की preparation कर रहे हैं, काफी major appointment है guys, because after 6 years a new RBI governor has been appointed. So basically this person is Sanjay Malhotra ji, who will be succeeding the incumbent governor Shaktikant Das. So presently Shaktikant Das was serving as the governor of the Reserve Bank of India, and now he will be succeeded by Sanjay Malhotra ji. And Shaktikant Das was basically appointed in 2018, and on 10th of December 2024 his 6-year tenure has come to an end. And guys, Malhotra's appointment marks him as the first RBI governor since D. Subba Rao ji, who has transitioned directly, जो direct finance ministry से RBI के governor बने हैं, तो ये ऐसे पहले RBI governor बने हैं after D. Subba Rao ji. I hope this point is clear to all of you. Now guys, if I ask you that who was the very first RBI governor, तो सबसे पहले RBI governor कौन थे? Sir Osborne Smith. अगर मैं आपसे पूछूं who was the first Indian RBI governor, फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द आरबीआई गवर्नर, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा. दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट
द 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024। तो गाइज ये डेफ गेम्स हुए थे मलेशिया के अंदर और यहां पर इंडियन टीम ने हिस्टोरिकली परफॉर्म किया बिकॉज इंडियन टीम वन टोटल ऑफ 55 मेडल्स। तो इंडियन टीम हैज वन 55 मेडल्स इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, जो कि इंडिया की अभी तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया की परफॉर्मेंस विद द लास्ट एडिशन, तो 2015 में आप देख सकते हैं इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 5 मेडल्स यहां जीते थे, एंड which is the 11 time increase from the previous performance. That's why we are calling it as a historical performance from the Indian team. And India has also finished 5th among 21 countries in this particular event, that is the 10th Asia Pacific Deaf Games 2024. I hope these details are clear to all of you. Moving to the next news article, that is about the Kush Mani, who has also created a history as he has become the first Indian. He has become the first Indian to win a FIA Constructors World Championship. तो ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये हुई थी आपकी अबू धाबी के अंदर। तो ये इससे पहले इंडियन ड्राइवर बने हैं जिन्होंने कि इस चैंपियनशिप को जीता है। सो वंस अगेन व्हेनेवर थिंग इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें याद रखना है वो डेटा जो कि पहली बार आ रहा है। Whatever which is happening for the very first time, it always attracts the attention of the examiner, and that's why we say such kind of questions in the exam. So I hope that you will be able to retain the name of Kush Mani. Kush Mani, Indian driver, FIA Constructors Championship इन्होंने जीती है। I hope this is clear to all of you. Moving to the next news article, that is Amazon Sambhav 2024 Summit. तो Amazon जो एक e-commerce प्लेटफॉर्म है, तो इसकी 2024 संभव समिट हुई है एंड इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली विद द थीम ऑफ नए इंडिया की नई रफ्तार। तो जब भी ऐसी कोई समिट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, वी नीड टू रिमेंबर इट्स थीम and where it was held. So it was held in New Delhi and the summit's theme was नई इंडिया की नई रफ्तार, New India's new momentum. तो जो पांचवा एडिशन है guys, it basically brought together different stakeholders across the industry so that they can come under one roof and they can really discuss about the advancements which have taken place in the artificial intelligence. तो artificial intelligence में क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है इंडिया का, तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड शोकेस्ड ड्यूरिंग दिस Amazon Sambhav 2024 summit. So I hope this point is clear to all of you. Now there is one more important point guys, that during this particular summit this venture fund of the Sambhav was also being discussed, that is Sambhav Venture Fund, जिसको 2021 के अंदर लॉन्च किया था Amazon ने, एंड इसने रिसेंटली एक्सपेंड किया है टू द $350 million एलोकेशन। तो यहां पर $350 million का ये फंड हो गया है एंड दिस इज रियली गोइंग टू टारगेट मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री। गाइस अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने मल्टीफोल्ड इंक्रीज देखा है इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप्स। अगर हम पहले बात करें तो देयर वाज अ टाइम आई थिंक इन 2014 व्हेन देयर वर जस्ट अराउंड 350 स्टार्टअप्स वर देयर, बट नाउ we are really able to achieve a very big number, that is 1.75 lakh. So this is really a kind of quantum increase in terms when we see the number of the startups in our country. So this is again, these kind of summits, conferences and steps are really going to boost the present Indian startup culture in our country. Moving to the next news article, that is an MOU between GSI and CNR IRPI. So basically एक MOU sign हुआ recently, Geographical Survey of India और Research Institute for Geohydrological Protection of the National Research Council, जो कि एक इटली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. So guys, what exactly they are trying to do with this? Basically, we all know that in India we have seen in the previous year as well, we have seen many times that there were so many incidents of landslides taking place. तो landslides को अगर हम basically landslide हो रही हैं तो उससे पहले हम क्या actions ले सकते हैं and how we can mitigate the impact of the damages which are being caused by the landslides. So basically keeping this in the objective, that is why this MOU has been signed between these two organizations to enrich the knowledge and to acquire skills in the landslide forecasting and early warning. और ये कैसे होगा? कोलैबोरेटिव रिसर्च के थ्रू ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर रिसर्च करेंगी. दे विल बी वर्किंग ऑन the landslide forecasting and early warning systems so that we can really make sure and we can forecast that okay, if at some particular place landslide is going to happen, so we can basically make sure that yes, there are no damages to the lives of the people, as well as how we can basically reduce the damage and the impact of that particular landslide, and that's how it is going to empower India's landslide early warning systems. ठीक है, so ये
क्रिटिकल टूल के तौर पे काम करेगा टू सिक्योर लाइव्स एंड प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन इन द हिल एरियाज। तो हिल एरियाज में डिस्ट्रक्शन को रोकने में मदद करेगा और साथ ही साथ इट विल बी एक्टिंग एज अ क्रिटिकल टू सिक्योर लाइव्स ऑफ द पीपल। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so this is an MOU between GSI and CNR IRPI. जब भी एक MOU आता है we have to remember the parties between which that MOU has been signed, और साथ ही साथ हमें याद करना है what is the aim of that particular MOU। ठीक है, तो दोनों चीजों को हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। So this is again an MOU which has been signed between the Department of Promotion of Industry and Internal Trade along with the Flipkart। तो Flipkart जो कि एक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इट इज अ इंडियन प्लेटफॉर्म एंड it has partnered with the DPIIT, and these two organizations what they will be doing, so again there is a MOU between some parties. The name of the parties we have covered. Now what is the aim of this particular MOU? That is to support and empower tech startups across India। इंडिया के अंदर जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनको हमें सपोर्ट करना है और साथ ही साथ उन्हें एम्पावर करना है। सो बेसिकली कैसे हम कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेसिबिलिटी टू द डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स, जहां पर पता चलता है कि अबाउट द मार्केट रिसर्च कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, रिसर्च पेपर्स, डेटा सेट्स और बाकी स्टडीज विच आर बीन पब्लिश बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जहां पर मार्केट रिसर्च के बारे में पता चलता है। एंड अलोंग विद दैट फास्ट ट्रैक पेटेंट एप्लीकेशंस, उनको हम कैसे फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, विच आर फाइल्ड बाय स्टार्टअप्स फॉर टाइमली अपॉर्चुनिटीज। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोलैबोरेशन वी विल बी एबल टू बूस्ट अगेन द स्टार्टअप कल्चर इन आवर कंट्री। और फ्लिपकार्ट का भी एक इनिशिएटिव है, दैट इज द फ्लिपकार्ट लीप एंड वेंचर्स इनिशिएटिव विद इट्स USD 100 मिलियन फंड। तो इस इनिशिएटिव के अंदर $100 मिलियन फंड क्रिएट किया गया है एंड दिस फंड विल डेफिनेटली बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एम्पावर द टेक स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री। सो दिस इज व्हाट or basically the kind of major details that we need to remember from the exam point of view from this particular news article। okay, so Flipkart का DPIIT के साथ हुआ है, इससे पहले हमने Amazon की समिट देखी थी। so these things are really required to be remembered। now moving on to the next news article that is on the Human Rights Day। तो guys Human Rights Day हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं on 10th of December। we have 10 fingers in our hands, so basically हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 10th December को Human Rights डे हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द डे विद द थीम ऑफ आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। सो दिस इज द थीम। सो जब भी हम एक इंपॉर्टेंट डे कवर करें, वहां पर डेट क्या है और थीम क्या है, इसको याद रखिए। और ये जो डे है इट कमेमोरेट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जिस डेट को ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने यहाँ डिक्लेयर किया था और अडॉप्ट किया था 10th of December 1948 को, तो उसी डेट को हम कमेमोरेट करते हैं एज ह्यूमन राइट्स डे। एंड दिस वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच बेसिकली प्रोवाइड्स and basically tells the society to make sure that here the justice and the human dignity are the bedrock of our society, right? So it promotes the justice and the human dignity, and that is the very first right of every human being, and that is why this day is being celebrated। और इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कब स्टैब्लिश किया गया था? 12th of October 1993 को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this is something we can definitely remember from exam point of view about the Human Rights Day। Now moving on to the next news article। So former Chief Minister of Karnataka and the former External Affairs Minister of India has recently passed away। The name of the person is S.N. Krishna, who passed away recently। He served as the Minister of External Affairs for this timeline and Karnataka Chief Minister from this timeline। I have just given you the timeline for some additional purposes, but from the exam point of view you are just required to remember the name of the person, क्या profession था, और basically he was majorly known for being a former Chief Minister and the External Affairs Minister of India। ठीक है, Chief Minister कर्नाटका के रहे हैं और इंडिया के External Affairs Minister रहे हैं। I hope this is clear to all of you। Now the next news article, guys। So a few days back we have covered that Jay Shah has recently taken over as the chairman of ICC, and earlier he was serving as the president of Asian Cricket Council as well। अब क्योंकि Jay Shah has switched and now he is no longer the president of ACC, that's why Sri Lankan Shammi Silva has taken over as the president of the Asian Cricket Council and he has succeeded Jay Shah। and अगर हम बात करें शमी सिल्वा की, तो उन्होंने पहले भी एज अ चेयरमैन ये रह चुके हैं कुछ डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
So one more appointment that we have covered, इससे पहले हमने की थी संजय मल्होत्रा जी की अपॉइंटमेंट, who has recently become the new governor of the Reserve Bank of India. Okay, so he has also taken the chair, he has also assumed the charge of the RBI governor yesterday, right? Moving to the next news article about the INS Tushil. तो INS Tushil को कमीशन किया गया है यहाँ पर. So it was commissioned into the Indian Navy at the Yantar shipyard. ये यंतर शिपयार्ड अगर हम बात करें, it is not in India, it is in Russia. तो रशिया के अंदर जो यंतर शिपयार्ड है वहां पर इंडियन नेवी पे कमीशन किया गया है INS तुशील को. ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है. बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ मिसाइल सिस्टम्स व्हिच आर इंडक्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर INS. नाउ इट इज अ रिजल्ट ऑफ द कोलैबोरेटिव प्रोग्रेस ऑफ रशियन एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज. तो इंडिया और रशिया ने मिलकर इस पर्टिकुलर स्टेल्थ फ्रिगेट को क्रिएट किया है. So which country has partnered India for this particular initiative? That was Russia. That can be asked you as a question in the exam. And it is upgraded Krivak 3 class frigate and it will be joining the Sword Arm, जो Indian Navy की Sword Arm है, in the Western Fleet under the Western Naval Command. तो ये इसको join करेगा when it will be coming to India. Okay. So what is the name? INS Tushil. INS Tushil एक stealth guided missile frigate है. I hope this is clear to all of you. So now let's moving on to the next news article that is about the India Internet Governance Forum. तो India Internet Governance Forum का 4th edition recently conduct किया गया and it was held in New Delhi. Once again, when such kind of conference or forum is taking place, we need to remember the theme. The theme for it was innovating internet governance for India. This is the theme, and this particular initiative is supported by the Ministry of Electronics and Information Technology and the National Internet Exchange of India. Again guys, this particular forum is a kind of single platform where the different stakeholders again come together. They discuss about the issues which internet is facing and how we can basically enhance the productivity of the internet and other important issues related to the internet. So all these things are being discussed during this particular forum, and this is also going to focus on bridging the digital divide and it will enhance trust and safety in the online environment. तो हमारा online environment हम देखते हैं हैकिंग होती है, यहाँ पर लोगों की प्राइवेसी चली जाती है. तो बेसिकली एक हमें ट्रस्ट एनहांस करना है और सेफ्टी को और ज्यादा एनहांस करना है इन द ऑनलाइन एनवायरमेंट. और जो डिजिटल डिवाइड है, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड द मोबाइल फोन्स और द इंटरनेट एंड देयर आर सम पीपल हु आर हैविंग दिस फैसिलिटी ऑन देयर फिंगर टिप्स. सो बेसिकली इस डिजिटल डिवाइड को हमें कम करना है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फोकस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉरम. अगर हम बात करें IIGF की गाइस, तो ये एक इंडियन चैप्टर, इट इज अ इंडियन चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. एक ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि अमंग द पब्लिक पॉलिसी डायलॉग फॉस्टर करता है कि ठीक है आप लोग इकट्ठा हुए और आप बेसिकली ट्राई टू डिस्कस अबाउट दिस इश्यूज रिलेटेड टू द इंटरनेट. And it was established in 2021 और IIGF प्रमोट करता है collaborative discussions among the different representatives, be it the government officials, civil society, industries, technical communities and other think tanks. तो इन सभी को एक single platform provide करता है so that they can come together and they can basically see what can be done with the issues and how they can be resolved. Okay, so this is another important news article which has taken recently, which has happened recently. So guys, that was all the important news articles. Now let's try to solve the MCQs which are related to this particular news articles that we have covered. तो सिर्फ हमें करंट अफेयर्स को कवर नहीं करना, हमें उन पर MCQs को भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम के अंदर MCQs आएंगे और हमें उनको सॉल्व करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन आपका बीमा सखी योजना के ऊपर है. Kindly consider the following statements about the scheme and identify the statements which are correct. तो ये इनिशिएटिव LIC का है, absolutely right. It empower women aged 18 to 70 years, absolutely right. Third statement, this scheme will receive a stipend of 7,000 per month for 3 consecutive years. So guys, जैसा कि हमने बात की थी कि there are basically 3 slabs. First year में 7,000, second year में 6,000, third year में 5,000 stipend will be there per month. So this statement is incorrect. Right answer will be option A, that is 1 and 2 only. Moving to the second question, you have to identify the Indian e-commerce company जिसने MOU साइन किया है DPIIT के साथ to invest in and mentor the Indian startups. What is the name of that organization जिसने DPIIT के साथ MOU साइन किया? That was Flipkart. So option C, Flipkart is the right answer. Next question. So it is a very easy question.
We have to identify the name of the person who has been recently appointed as the 26th governor of Reserve Bank of India, and he is none other than Sanjay Malhotra. That is option B. So guys, I hope कि आप सभी इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए होंगे, एंड स्टिल इफ यू आर समवन हु इज नॉट एबल टू आंसर, डू नॉट वेरी, आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, सो दैट यू कैन वंस अगेन वॉच द सेशन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विच इज मेंशन्ड हियर, राइट? सो गाइस, दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन, एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. लास्ट सेशन में भी काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, तो इस सेशन में भी वी आर हैविंग दिस होमवर्क क्वेश्चन, एंड द पीपल हु विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली, दे विल बी द स्टार परफॉर्मर ऑफ द टुडे सेशन. ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट सेशन के क्वेश्चन की, इट वाज बेसिकली ऑन द केंद्रीय विद्यालय, and here the right answer was option B, and the students who have answered the question correctly are Nishu, Facto, Real Human, Aditya, then Rishi, Anuj, Khushbu, Ankita, Prajwal, Gururaj, Aditi, Abhiram, all the people guys, once again well done to all of you, and this shows that yes, you are really able to understand the current affairs, and you are also able to solve the MCQs correctly from the exam point of view. ठीक है, and apart from that, thank you Ashu Wagmere and Nishu for your appreciation regarding the session. और guys, अगर आपको भी पसंद आया हमारा सेशन, तो you can definitely let me know your opinion and your view about the session in the comment section of this session. And that was all from the today's session. If you are still new to our YouTube channel guys, kindly subscribe to it, और आप bell icon को press कर सकते हैं to receive all the notifications related to the videos that we will be coming up in the future. और साथ ही साथ अगर आपको आज के सेशन का PDF एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. So that was all from the today's session guys. I hope that it was really a fruitful and useful session to all of you. And अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और you can either email to us at hello@edutap.co.in. So guys, now we will be keep on coming with such more sessions. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.